So hello everyone, welcome back to the last session of paper 20B, that is रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज इसका लास्ट सेशन होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इसमें मॉड्यूल 8 जो है दैट इज मैनेजिंग रिस्क इन इंश्योरेंस बिजनेस को कवर अप करने वाले हैं। आई होप आपको जितने भी सेशन मैंने लिया है वो अच्छा लगा होगा। शायद मैंने अभी तक 6 वीडियोस अपलोड किया है जिसमें मैंने पूरा मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 7 तक कवर अप किया है। एंड ये नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा अब, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अब रेडी है। तो आप लोगों को बस एक बार 2 बार इंस्टीट्यूट मैथ पढ़ के मेरा रिवीजन वीडियो देखना है अलोंग विथ माय नोट्स। अगर होगा तो आप लोग प्रिंट भी निकाल सकते हैं, नो इश्यूज। एंड उसके बाद आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, राइट। माय इंटेंशन इज कि आप लोगों को एक एग्जाम के पहले ओवरऑल गाइडेंस भी मिल जाए, ओवरऑल आइडिया भी मिल जाए, टॉपिक का भी एक बार आप लोगों का रिकॉल हो जाए। अगर आप लोगों का पढ़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का रिकॉल भी हो जाएगा। सो दिस आर माय मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड इसी रीजन की वजह से मैंने पेपर 20C भी अपलोड किया था। आज मैं पेपर 20B का भी पूरा रिवीजन अपलोड करने वाला हूँ इसी के साथ, एंड कंप्लीट भी हो जाएगा। एंटायर रिवीजन 20B सेशन कंप्लीट हो जाएगा आज, राइट। तो पेपर 20B का कोई भी अगर स्टूडेंट है जिसने ऑप्ट किया है या अभी सोच रहे हैं कि ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनके साथ प्लीज आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिए। आप लोग अपने फ्रेंड, अपने जूनियर कोई अगर चाहते हैं कि हाँ पेपर 20B मुझे ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पेपर 20C मुझे ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर इसमें भी अगर बहुत जन डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है तो उन लोगों के साथ भी आप लोग ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को एक आइडिया लग जाएगा, राइट। सो इसी के साथ मैं आज का लास्ट सेशन जो है मॉड्यूल 8 वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बस आप लोग सुनते जाइए क्योंकि दीज आर मोर ऑफ अ डेटा ड्रिवन थिंग्स एंड याद नहीं करना है, बस सुनते जाइए। एक स्टोरी की तरह आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। और उसके बाद आप लोग 2-3 बार अगर रीड करेंगे देन यू आर रेडी फॉर द एग्जाम एज वेल, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द रिस्क एंड द नीड फॉर प्रोटेक्शन। की आइडिया क्या है ना, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, राइट। While we can't eliminate risk, we can manage it to protect our financial goal, health, property, and lifestyle. Everyday risk management is there. We manage risk daily by driving cautiously, locking our homes, securing valuables. Insurance is one of many tools in this strategy. बहुत सारा टूल हो सकता है जिसमें से इंश्योरेंस वन ऑफ द टूल है। Now, what are the roles of insurance in risk management? की आइडिया क्या है इसका ना, इंश्योरेंस अलाउ इंडिविजुअल्स टू ट्रांसफर रिस्क to an insurer in exchange for a premium. The insurer pools risk and pay for losses as per policy terms. Risk in insurance terms cover, that is, risk is nothing but chance of loss or unexpected event. Example, theft, illness. Insurer assess probability and impact of such event to price the premium. Insurance doesn't prevent loss, it mitigate financial impact. Now, what are the type of risk involved? Type and description. Objective risk, measurable deviation from expected outcomes like based on statistics. Subjective risk, personal perception of uncertainty, varies by individual mindset. Personal risk, risk to life, health or income, example death or disability. Proprietary risk, property risk. Property risk क्या है? Risk of damage or loss to assets like fire and flood. Liability risk, legal risk of being sued for injury or damages. Speculative risk, risk with potential for gain or loss like investing in stocks. Now, insurance planning. Why people buy insurance? Purpose and example. क्या होगा? Maintain lifestyle after death. So that is the life insurance. Ensure income continuity, that is called disability insurance. Cover medical expenses like health or medical insurance. Protect tangible assets like motor insurance, home insurance is there. So क्या क्या इंश्योरेंस है, उसका एग्जाम्पल और पर्पस क्या है, मैंने वो एक छोटा सा चार्ट बना के आप लोगों के लिए दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट, अ फाइनेंशियल प्लानर हेल्प assess risk and suggest suitable coverage. Next is risk profile of insurers. Key idea is even insurance company face risk from the unpredictability of claims to financial losses due to market or operational issues.
की रिस्क क्या होगा फेस बाय इंश्योरर्स, like inaccurate estimation of future claim, inadequate premium rate, asset depreciation, broker or reinsurer default, economic instability and insurance cycles. Insurers must maintain reserves, adopt reinsurance and apply actuarial models to manage these risks. Perils and hazards, causes and condition of risk क्या है? जैसे peril हो गया, peril में that is immediate cause of loss is like fire हो सकता है, flood हो सकता है, theft हो सकता है. Classified into several things or part, like natural हो सकता है like earthquake, cyclone, flood, lightning. Man-made भी हो सकता है like theft, vandalism, riots, accident, terrorism. इकोनॉमिक भी हो सकता है लाइक रिसेशन, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल क्लोजर्स. तो आप लोग देख रहे हैं दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर. अगर आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे मेरे साथ, ध्यान से अगर आप लोग रीड करेंगे 2-3 बार, आप लोग ऑटोमेटिकली इसमें समझ में आप लोगों को आएगा कि हाँ ये तो बहुत इजी टॉपिक है, इसमें सच कुछ टफ नहीं है, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू द 2001 गुजरात earthquake was a massive natural peril causing large scale insured and uninsured losses. Next is hazard. Hazard is like a condition that increases the chance or severity of a losses. टाइप ऑफ हैजर्ड के अंदर क्या कवर होगा, लाइक टाइप है और एक्सप्लेनेशन मैंने किया है. जैसे फिजिकल टेंजिबल कंडीशंस लाइक फॉल्टी वायरिंग हो गया, स्लिपरी रोड हो गया. मोराले मतलब केयरलेसनेस ड्यू टू इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, एग्जांपल लिविंग कार अनलॉक्ड. मोरल dishonest behavior intending to exploit insurance like stagning and accident. Next is uncertainty in insurance business. Two major area of uncertainty. Claims already incurred like unsettled or not yet reported. Future premium adequacy like affected by inflation, changes in risk, reinsurance cost. Smaller insurers face greater volatility due to limited data and scale. Risk modeling and component. Key component of for actuarial risk modeling. क्या होगा इसके अंदर, like volatility, fluctuation in outcomes, example high variation in claim amount. Uncertainty, inability to predict future loss pattern accurately. Frequency, how often a loss may occur. Severity, how significant the loss may be. Next is models help insurers determine reserve requirement and fair premiums. Conclusion में क्या बोला जा रहा है, risk is an inseparable part of life and business. Insurance helps mitigate its financial impact. However, effective risk management begins with identifying the risk, reducing its likelihood, transferring the residual risk, being prepared for its impact. Insurers and policyholders alike must understand the interplay of risk, peril, hazard, and uncertainty to ensure effective protection and resilience. राइट. नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारा टाइप जो रिस्क है उसके ऊपर. तो टाइप ऑफ रिस्क हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन. टाइप एंड एक्सप्लेनेशन. जैसे कि पहले ऑब्जेक्टिव रिस्क इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग एक बार ध्यान से इसको सुनेंगे, राइट. इंपॉर्टेंट है ये. So this refers to a measurable variability in actual outcomes compared to expected outcomes. For example, an insurer expects 2 out of 1,000 insured homes to catch fire, but if 5 do, the difference is objective risk. It's reduced by the law of large numbers, where larger data set help predict outcomes more accurately. Subjective risk. Based on personal perception, fear, or uncertainty, and varies between individuals. For example, two people might view flying as highly risk or relatively safe depending on their mindset, not statistics. Next is personal risk. Involve the possibility of personal loss such as death, disability, or unemployment that affect one's earning capacity. Property risk relate to potential loss or damage to personal or commercial asset like homes, vehicle, inventory.
Liability risk occur when an individual or business is held legally responsible for injury or damages to another party. Speculative risk involve a chance of loss or gain. Example, investing in the stock market. Unlike pure risk, speculative risks are not usually insurable. Next is insurance planning. Insurance planning is nothing but insurance is a key tool in risk mitigation. People and business purchase insurance to manage financial consequences of adverse event. Insurance type and purpose. Life insurance provides financial stability to dependents in case of premature death of the earning member. Disability insurance offer income replacement when the insured cannot work due to disability. Health insurance cover hospitalization, surgery, other medical expenses. Property insurance protect against loss or damage to tangible assets like homes, vehicles. Business liability mitigates risk of the business interpretation, legal suit, or professional negligence. Role of insurance advisors practitioners that helps client identify the insurable risk, suggest adequate coverage, periodically review and update coverage. Next is risk faced by insurers. While insurers absorb risk from policyholders, they too face uncertainties such as key risk areas and details. Claim uncertainty. Insurers cannot perfectly predict how many claims will arise or the cost involved. Pricing risk. Charging too little may result in losses while charging too much may make them uncompetitive. Right? Reinsurance risk. When a reinsurer default or delay claim payments, it affects the insurer's liquidity. Asset value risk like poor investment performance can weaken the insurer's ability to meet future claim. तो आप लोग देख रहे हैं कितने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब लोग मैंने क्या किया है, मैंने सभी टॉपिक का एक समराइज कंसाइज में उसका पॉइंटर लिखा है सो दैट आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग याद आ जाएगा। राइट। इंश्योरेंस साइकिल मतलब मार्केट फोर्सेस कॉज ऑल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ हाई एंड लो प्रीमियम रेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। Operational risk, failures in processes, IT systems or human error also pose risk to insurers. Perils के अंदर क्या आएगा? Perils are immediate cause of loss or damage. These are divided into three categories: type or example and explanation. Type में natural perils, earthquake होएगा, flood, तो earthquake हो गया, flood हो गया, tsunami हो गया, landslide हो गया, hurricanes like known as act of God. They are beyond human control and cause widespread loss. Next, man-made perils. Theft, riots, terrorism, accidents, strike, vandalism. These arise due to human actions and social disturbance. Economic perils, inflation, recession, industrial decline, or business failures that result in job loss, income reduction, or capital erosion. Next is hazards. Hazards are conditions or behavior that increase the likelihood or severity of a peril. They are not the direct cause of loss but contribute to its occurrence. Type and explanation क्या है इसके अंदर? Physical hazard. Physical conditions that increase risk. Example. So physical hazards conditions that increase risk. Example, old electrical wiring, slippery road, lack of security is there. Moral hazard occur when a person engages in unethical behavior because they are insured. Example, staging accidents for claims. Right? Morale hazard क्या है? Arises from carelessness due to the presence of insurance. Example, leaving the car unlocked knowing that theft is covered. Right? नेक्स्ट पार्ट हम लोग जा रहे हैं इवॉल्विंग रिस्क लैंडस्केप इन इंश्योरेंस। क्या इवॉल्विंग है रिस्क लैंडस्केप का? ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल शिफ्ट इंश्योरर्स नाउ फेस हाईलाइटेड रिस्क इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट वोलेटिलिटी, longevity, mortality risk, terrorism, pandemics, and climate change is also part. Stakeholder security has increased, and low income families are the most vulnerable to frequent and severe financial shocks. Hence, anticipating and managing risk is essential for both insurers and individuals. Core principle क्या है of risk management का?
Now, risk management involves identifying risk, assessing their impact and likelihood, implementing strategies to mitigate or transfer them. Next, insurance companies use tools such as stress testing, capital modeling, enterprise risk management (ERM) to manage underwriting, market, credit, operational, and liquidity risk. Role of senior management. Boards must integrate risk governance into strategic planning. Risk appetite statement and clear policies must be established. Right? Now, what are the role? Risk appetite statement and clear policies must be established. Risk committees should provide oversight, not just identification, and evolve from operational focus to full spectrum of risk oversight. Now, what are the benefit of risk management? Effective risk management helps conserve resources and reduce liabilities, protect reputation and operations, enhance compliance and legal resilience, improve decision making, and prepare for uncertainty. Traditional versus alternative risk transfer. Traditional insurance is no longer sufficient due to moral hazard, high deductibles, asymmetrical information, and rating inequities. ART techniques emerged to address these inefficiencies, like captive insurance, risk pools, risk retention groups, finite reinsurance, insurance linked securities, securitization, multi line, multi year solution, contingent capital mechanisms. These are there. Next, these methods integrate capital market and insurance, offering customized, scalable, and risk sensitive alternatives. Risk identification and assessment. ERM required a structured dual level like top down and bottom up approach. Top level में क्या होता है? Strategic risk threatening firm wide sustainability, while bottom level में departmental risk identified through control self assessment. Use of a risk register is vital to aggregate and monitor risk. Like risk are evaluating using frequency like likelihood and severity like impact mapped on 2 by 2 matrix to prioritize response. Risk treatment techniques like insurance companies must evaluate product risk, pricing, reinsurance arrangement. Document risk limits, claim assessment criteria, and underwriting standards align with business strategy, legal framework, and market dynamics. Key strategies like avoidance there, prevention is there, reduction is there, separation, duplication, diversification is also the one of the part of the strategies. Next is monitoring and review. A robust system for risk monitoring includes continuous review of risk indicators, identifying trend in claims and lapses, comparing KPIs versus business plans, ensuring product relevance and profitability, internal audits and actual revenues, global lessons and ERM importance. The US debt crisis, subprime meltdown, and dot-com bubble show the consequences of poor risk anticipation, right? So the global insurance failures emphasize need for independent and integrated risk functions, group level oversight, capital adequacy, ERM based frameworks is there, cooperation between governments, insurers and rating agencies also part of their risk financing through ART. Now ART products help insurers reduce dependency on reinsurers, improve solvency margins and enhance profitability. These include securitization like catastrophe bonds is there, weather derivative is there. So catastrophe bonds is there, weather derivative is also there. Contingent capital, multi-trigger policies and risk derivatives is also part of there. So they align risk transfer with value creation rather than just indemnity, promoting a capital market integration. ठीक है, तो अब लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या क्या बात हो रहा है कि डिस्कस कर रहे हैं हम लोग पॉइंट वाइज, जो बहुत टफ नहीं है. हो सकता है आप लोगों को थोड़ा लगे कि हाँ थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बोरिंग है, मोनोटोनस है, बट अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा है. नेक्स्ट इस कंक्लूजन क्या है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट प्रोटेक्शन, इट इज अबाउट स्ट्रेटेजिक resilience,
stakeholder trust and competitive edge. Effective use of ERM and ART along with robust internal governance help insurers not only survive shocks but also innovate and grow sustainably. Role of actuaries in insurance. Actuaries are professionals who assess financial risk using mathematics, statistics, and financial theory. In insurance, they evaluate risk and help determine appropriate premium pricing. They contribute to policy design, mortality, sorry, mortality analysis, and loss prediction across life, general, and health insurance domains. Their insights can influence policyholder behavior, like offering lower premiums for non-smokers. Next is regulatory क्या requirement है for appointed actuaries. That is important क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से, तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखेंगे क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है. So must be an Indian resident and fellow member of the Institute of Actuaries of India. Life insurance के केस में 10 years industry experience is there with 5 years post fellowship must pass life insurance specialization. General insurance के केस में 7 years industry experience 2 year post fellowship must pass general insurance specialization. Health insurance के केस में same as general insurance with health specialization acceptable. Must not exceed 65 years of age, must not hold similar appointment in another insurer, must possess a valid certificate of practice. अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया का थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे किया गया है, तो आप लोग एक बार ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएंगे. एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्चुअरीज एक्ट 2006, evolved from the Actuarial Society of India 1944. What are the objectives? These objectives include advancing actuarial profession, facilitating research and professional communication, guiding actuarial students in India, founding member of the International Actuarial Association IAA. Next is risk management in insurance. Now, insurance companies face core risk like underwriting, credit, market, operational, and liquidity risk. Actuarial science and ERM helps quantify and manage these risks. Risk management ensures business continuity, protect reputation, and strengthens customer trust. साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा रिस्क इन इंश्योरेंस में क्या बोला जा रहा है ना, इंश्योरर मस्ट सेफगार्ड नॉन पब्लिक पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक SSNS, हेल्थ रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल डेटा ब्रीचेस पोज सीरियस फाइनेंशियल, लीगल एंड reputational risk, and a cyber risk management plan is essential for compliance and trust. Now, what are the 5 steps of effective risk management? Appoint a risk manager, आइडेंटिफाई इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट. आप लोग अगर डिटेल में ये सब जानना है तो आप लोग एक बार इंस्टीट्यूट में गो थ्रू करेंगे, राइट, बट फॉर द रिवीजन पर्पस दैट इज एनफ. तो अपॉइंट रिस्क मैनेजमेंट मैनेजर, आइडेंटिफाई इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट लाइक डेटा थ्रेट और सिस्टम intrusion, assess likelihood and impact, evaluate existing safeguards like encryption, software security, implement control and policies. Next, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट में 5 स्टेप्स है अंडर ERM फॉर साइबर सिक्योरिटी. डिजाइन अ स्केलेबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, चूज सुइटेबल सिक्योरिटी कंट्रोल लाइक ऑथेंटिकेशन, एनक्रिप्शन, मॉनिटरिंग, integrate cyber security with ERM, stay informed about evolving threat and regulatory changes, provide continuous cyber security training to staff. Now, what are the conclusions? Insurance company must apply robust risk management practices not only for underwriting but also for internal cybersecurity. With increasing data reliance, combining actuarial science with enterprise risk management is essential to protect policyholders, comply with regulations and maintain a competitive edge. तो इसी के साथ आप लोग देख पा रहे हम लोग मॉड्यूल 8 भी कंप्लीट कर लिए हैं. आप लोगों को बस 2-3 बार इसको देखना है. वीडियो अगर लगता है कि 2-3 बार देखना चाहिए तो 2-3 बार वीडियो भी देख लीजिए. 2-3 बार अगर आप लोग रीड करेंगे आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ. एंड उससे पहले एक बार आप लोग इंस्टीट्यूट मैट को फॉलो करना, बिकॉज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर द रिविजन वीडियोज, दीज आर नॉट द डिटेल्स वीडियोज, राइट. डिटेल वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं. इन फ्यूचर मेरे पास अगर टाइम रहा तो आई विल डेफिनेटली अपलोड द सेम, बट अभी के लिए फिलहाल इतना काफी है टू कंप्लीट योर एंटायर
रिविजन्स ऑफ पेपर 20B। तो आई होप इसी के साथ मैंने होल पेपर 20B कंप्लीट किया मॉड्यूल वाइज। और कहीं पे भी अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी अगर आप लोगों का सजेशन हो तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एंड डोंट वरी, ये नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ, ये नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा मेरे वीडियो के साथ, सो आप लोग आराम से इस नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। एंड जो लोग भी मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, पहले से एकदम देख रहे हैं वन बाय वन मॉड्यूल वाइज वीडियोस, उन लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ। एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स कि हाँ, एक चैनल है जहाँ पे पूरा पेपर 20B पेपर 20C का रिविजन वीडियो अपलोड है, तो उन लोगों को भी पता चलेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग इसका सुविधा ले, आप लोग अपने फ्रेंड अपने जूनियर को भी बोले कि यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं, क्या क्वालिटी है वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना जितना हो सके पॉसिबल वे में इसको कवर अप किया है। इससे बेहतर हो सकता है क्या या नहीं, ऑब्वियसली हो सकता है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। हम लोग जितना और भी मेहनत करेंगे उतना और अच्छे से हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो स्टडीज हो, चाहे वो कोई भी काम हो। तो वो ध्यान हमेशा रखना है कि ऐसा नहीं है कि मेरा ही बेस्ट है। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट हाँ, अभी के टाइम में अभी के सिचुएशन में मैं अपना बेस्ट दिया हूँ। इससे बेहतर भी हो सकता है, ऑब्वियसली नो रीजन फॉर दैट। इससे बेहतर भी नोट हो सकता है, इससे बेहतर भी रिवीजन हो सकता है। बट अभी के लिए फिलहाल मेरे से जितना पॉसिबल हुआ है, मेरा जितना भी टाइम कंस्ट्रेंट है उसके अंदर मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो उसके हिसाब से मैं अपना बेस्ट दिया हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को जितना भी कोई भी अगर सजेशन हो, कोई भी अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये वाला होता तो अच्छा होता है, ये वाला सेशन होता तो अच्छा होता, प्लीज डू डू कमेंट इन माई वीडियोज, राइट। तो मुझे भी पता चलेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को नेगेटिव, कोई भी कमेंट, जो भी आप लोगों का सुझाव हो, आप लोग कमेंट में बताइए मेरे को। आई एम फ्री फॉर एक्सेप्टिंग ऑल द कमेंट्स, ओके, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। सो डोंट वरी एट ऑल। जस्ट आप लोग अच्छे से 2-3 बार इंस्टीट्यूट मैट को रीड कीजिए और उसके बाद मेरा ये रिवीजन वीडियोस एंड नोट्स साथ में पढ़िए। आई थिंक दैट इज एनफ, आई थिंक दैट इज एनफ, ओके। एंड आने वाले टाइम में मुझे जो लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है अपलोड करना चाहिए, मैं साथ साथ अपलोड भी करते रहूंगा फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच फॉर रिलाइंग ऑन मी एंड हैविंग सच काइंड ऑफ पेशेंस कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को दिल से थैंक यू। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प होगा इस वीडियो के थ्रू। कम से कम आप लोगों को आइडिया तो हो ही जाएगा पेपर 20B पेपर 20C का। तो आप लोग अगर कोई रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं फाइनल में तो आप लोगों को ऑप्ट करना होता है, राइट। तो उसमें आप लोग पहले एक बार वीडियो देख लीजिए। आप लोगों को अगर कंटेंट सही लग रहा है, अगर टॉपिक लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग कहीं से भी कोई भी पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो 20B हो, 20C हो, 20A हो, राइट। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियो के साथ आऊंगा आप लोगों का, और भी मैं कुछ कुछ जितना भी हो सके वीडियो ऐसे ही अपलोड करते रहूंगा, सो दैट आप लोगों की हेल्प हो। जिन लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं स्पेशली उन लोगों के लिए तो और भी ज्यादा हेल्प होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।